Hey guys, welcome and welcome back to my channel जहाँ पर आप समझेंगे तो आज के हम इस वीडियो में देखने वाले जून 2022 BCS-062 जो आपका 6 सेमेस्टर का बुक है इसका सॉल्व क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी से हम क्वेश्चन पेपर को पढ़ते और समझते जाते हैं कि कैसे क्या सॉल्व करना है। उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सो डिफाइन द टर्म्स ऑफ एम कॉमर्स, explain its attributes and what are the advantages. So M-commerce is stand for mobile commerce, and M-commerce used to include any monetary device. It is really easy to use, carry, and it is a new concept than e-commerce. ठीक है, ई-कॉमर्स जो था ना पुराना कॉन्सेप्ट पे वर्क करता था, ड्यू टू एम-कॉमर्स इज न्यू कॉन्सेप्ट। इट्स अलाउड टू receipt with a digital SMS verified confirm authentication security। आप जब कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हो मोबाइल के ऊपर, जैसे अमेजन हो गया, मिंत्रा हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इन सब में शॉपिंग करते हैं एसएमएस आता है तो वेरीफाई कि आपका जो वो है जो सामान आप लिए हैं, जो आप परचेज किए हैं, वो चीज़ आपको कंफर्म हो चुका है, ठीक है। इट इज़ डेवलप्ड बाय 1990s, ठीक है। उसके बाद इसके एडवांटेजेस है, जिसकी सारी है उस नोटिफिकेशन होता है, वेबसाइट वाला नोटिफिकेशन पोस्ट नहीं करता है, नहीं कवर जो वेबसाइट है तो कोई एक नोटिफिकेशन पोस्ट नहीं करता है, परफॉर्म विद द मोबाइल डिवाइस एंड सम एक्टिविटीज कैन बी परफॉर्म विदाउट ई-कॉमर्स विदाउट इंटरनेट कोई बात नहीं, बट इसमें कुछ विदाउट इंटरनेट disadvantages में compromise for security sensitive data। एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं हम, टैबलेट हो गया, स्मार्टफोन हो गया, पीडी हो गया, या पर्सनल डेटा सिस्टम। उसके बाद डिफाइन सेकंड वाला क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म्स ऑफ ई-कॉमर्स, एक्सप्लेन इट्स वर्कफ्लो, व्हाट आर इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ई-कॉमर्स स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक commerce, that is very much electronic. It is a types of method of buying and selling goods and services by online. It is type of business model or segment of larger business model. It has mainly four major marketing segments, which is B2B, B2C, C2C, and C2B. It means business to business, business to customer, customer to customer, and consumer, customer to business, customer to consumer. ठीक है, ये जो है आपका वर्क फ्लो है, स्क्रीनशॉट ले लिया, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आसानी से आप उसको ले सकते हैं। इस पर इस क्वेश्चन में था कि डिफरेंस कैसे है ई कॉमर्स और एम कॉमर्स में, तो यहाँ पे इसके बाद एक्सप्लेन द नेटिव बिजनेस मॉडल। ठीक है, नेटिव बिजनेस मॉडल क्या है, तरीका से इंटरनेट मॉडल है which is used in business to customer, business to business, and more recent, which is C2C. It is types of model which is simply approach of a company takes become a profitable business on the internet. ठीक है, what is digital signature? How does it? काफ़ी बार देखे होंगे आप, कभी आप कोडर हैं या प्रोग्रामर हैं, आप कभी ऑनलाइन कोर्स करते हैं कोडिंग के या कोई भी चीज़ आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता होगा। अगर आप सर्टिफिकेट लर्न कर रहे हो तो वहाँ पे एक डिजिटल सिग्नेचर प्रोवाइड होता है ना, तो वही डिजिटल सिग्नेचर क्या है। डिजिटल सिग्नेचर इज टाइप्स ऑफ सिग्नेचर, इट इज इलेक्ट्रॉनिक और मैथमेटिकल टेक्निक। ठीक है, इधर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, उसमें इतने चीज हो चुकी है, इट इज अ मैथमेटिकल टेक्निक which is intercepted stamp of authentication on the digital information such as messages. It is confirmed to integrity of the message, and digital signature used to an email, certificate of e-learning, scan signature, and insert into the document. उसके बाद है कि what is the SSL? Explain the its work, working with the help of diagram. It stands for secure socket layer. It is used for the technology which is secure, encrypted. Okay? It is standard technology for securing an internet connection by the encrypted data sent between website and browser. It is protect your website from hackers and it shows that your website has encrypted connection. And it is a types of certificate that show your data is safe and protected. उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है, प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बहुत सारे नए वीडियोस अपलोड कर रखे हैं आप लोग के लिए। अगर आप लोग को BCS-062 या फिर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको वीडियोस चाहिए होता है तो प्लीज़ यूट्यूब पे वो सब्जेक्ट का नाम लिख के मेरा नाम डालें। अगर उस सब्जेक्ट की वीडियो को तो मुझे मेरे चैनल
वीडियोस आपको शो आउट हो जाएंगे, ठीक है। और ये रहा वर्क फ्लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अदरवाइज पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यूडीआई स्टैंडर्ड क्या है? यूडीआई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक data interchange. It is types of technique. It is used for replace physically exchange of document between companies. ठीक है? There are two types of UDI standard, which is proprietary and standard, and second is public standard. Public standard क्या है? It is developed used to cross one and more industry. There are survival UDI standard used today, which is ANSI, and UDI FACT, which is stand for America National Standard Institute, and UDI FACT, which is stand for uh, Electronic Data Interchange for Administration and Commerce and Transport. Okay. Fact number question: explain the two categories into the which search engines are classified. Search engines are brand search document for a specified place. Such example, इसके कुछ search engines which is Google, Chrome, Firefox, Edge, है ना, बहुत सारे। इसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है। There are three types of search engine, which is plural web search engine and human powered directly the search engine. B number question: cybercrime. What is cybercrime and what are the different categories of cybercrime? Cybercrime is a types of crime. It is also called computer crime, and when some people doing crime with computer or internet, that is called cybercrime. There are some categories which is used in categorized in cybercrime, just missing, murder, security hackers, identity theft, cyberbullying, cyber stalking, internet and cyber tutorials. तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लोग के बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एंड आपको जो भी सब्जेक्ट को सर्च करना है प्लीज उसको लिख के आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। इवन आप कोडिंग से रिलेटेड पाइथन हो गया, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, सी हो गया, C++ हो गया, कुछ भी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लेके बाय, स्टे सेफ।